Hello everyone, welcome to PRATHAM Test Prep. My name is Ashish Bhargav and here we have with another episode of daily news analysis that we do from Monday to Friday. And कैसे हैं आप सब? I hope you guys are doing well. Before we start, please let me know if my voice is audible. Am I visible to each and everyone? Am I audible and visible to everyone? Yeah. So good morning everyone. आप सारे अच्छे होंगे. I hope that you guys are doing well. And as we know, in daily news analysis, we discuss about all the important news like national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. And apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills which is in the parliament. So that is a very important thing that we discuss. So in short, that newspaper gives you an idea like what kind of things that you should prepare for that. And here's the quote that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And here is the questions of the day. So we'll ask you the 5 questions. And quick tips में आज देखेंगे SAARC country को learn करने के लिए what should be the mnemonics to learn. And here we have the first article, Modi to take part in World Climate Action Summit in Dubai this week. So here is the summit is a high-level segment of 28th UN Climate Change Conference that being held under the presidency of the UAE. So who is taking presidency of that COP26? That is UAE. And the key feature of this event is that it will be the conclusion of the global stock take reckoning of action taken by each country. So 2021 में जो 26 summits हुई थी COP की, COP का मतलब होता है Conference of Parties, COP which means Conference of Parties. So ये कहाँ पे हुई थी my friends? ये हुई थी ग्लासगो, that is ग्लासगो में, स्कॉटलैंड. सो वहाँ पे 5 specific targets से that title Panch Amrit that as a part of India climate action plan. These consisted of committing India to be a net zero by carbon neutral by 2070. हमारा जो टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने के लिए, and that is a net zero plan. And that second thing that we are going to achieve 500 gigawatts of energy installation by 2030. So the very few things that you should understand is that अभी जो हमारा है नवंबर 28 से दिसंबर 12 तक ये समिट्स होंगी, राइट? वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट. मेक श्योर आपको मैं फिर से रिमाइंड करवाऊँ, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट्स, और ये कहाँ पे होंगी? ये होंगी दुबई में, राइट? सो सबसे पहले COP26 के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन यू शुड नो अबाउट. जो COP26 समिट्स जो थी दैट इज ब्रॉट पार्टीज टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन टुवर्ड्स द goals of Paris Agreement, the UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC पे. So according to the UNFCCC, COP26 will work towards 4 goals. पहला, net zero by 2050, to secure net zero by mid-century and keep 1.5 degrees within reach. So countries are being asked to come forward with ambitious 2030 emissions reduction target that include reaching net zero by the middle of the country. That to deliver on these stretching targets, country will need to accelerate the phase out of coal. यहाँ पे सेकेंड आर्टिकल तरफ हम मूव करते हैं. प्रेसिडेंट मुर्मू कॉल्स फॉर द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस. सो इसकी डिमांड क्यों कर रही है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने संडे को बताया कि दैट इज सेटिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एज अ वे टू इंश्योर इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन डाइवर्सिटी, इंडिया's diversity in the judiciary, stressing that the cause of justice was the best served by making it accessible to all. So in her remarks, the president said more varied representation of India, unique diversity on bench and bar definitely helps serve the cause of justice. And one way to hasten this diversification process that can be creation of a system in which judges can be recruited from varied backgrounds
through a process which is merit based. एंड उन्होंने ये भी बताया कि सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच टू इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस आर सिस्टम हैव बीन प्रोडक्ट्स ऑफ टाइम, मोर प्रिसाइजली प्रोडक्ट्स ऑफ colonialism that clearing away its vestige, it has been a work in the progress. So in short, the value of justice, liberty, equality and fraternity are the principles on which we have agreed to conduct ourselves as a nation. और ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा हमारे जो प्रियम्बल है उसमें भी मेंशन की हुई है, दैट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. सो इन शॉर्ट, सिंस इंडिपेंडेंस टिल नाउ एज वी नो, हमारे पास कोई भी फीमेल सीजीआई नहीं है, दैट्स वाई. और जो पार्टिसिपेशन है फीमेल की वो आपकी जुडिशियल स्ट्रक्चर में बहुत कम है. अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें 34 जजेस में से लेस देन 5 जजेस हैं जो फीमेल हैं एट प्रेजेंट. So that's why she says such a system that can offer opportunity to less represented social groups. So here the third one. अच्छा, ये एक आर्टिकल थी इसमें पॉलिनेटर्स के बारे में. पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? वैसे आपने देखा होगा कि जो पॉलिनेटर्स होते हैं उसका बेसिकली काम क्या होता है. जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपके एंथर, स्टिग्मा एंड ऑल, उसमें आपके जो पॉलन होती है, स्टिक होती है, बेसिकली उनके एक रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है. सो पॉलिनेशन इज द बेसिकली ट्रांसफर ऑफ पॉलन विच इज द मेल गैमेट्स होते हैं. जो आपका पॉलन होता है दैट इज नोन टू बी अ मेल गैमेट्स and that between the male and female parts of flower to enable plants to reproduce. उसके लिए यूज करते हैं pollen grain. So who are the pollinators? It can be your insects, birds, squirrel, monkeys, reptiles, or even people pollinate also. So in Europe, pollinators are butterflies, beetles, bees, hoverflies, moths, ये सारे होते हैं. तो सबसे जो ग्रेटेस्ट पॉलिनेटर्स होता है वो हमारा, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा बीज. बेसिकली इसमें ये दिखाना था. सो इसमें 20,000 वाइल्ड स्पीशीज हैं यूरोप में, दैट इज पॉलिनेशन से होती है विद द हेल्प ऑफ बीज. उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट सर्ट के बारे में. सी ये सर्ट क्या है? सबसे पहले तो ये देखो, ये जो सर्ट आपने यूज किया यहाँ पे, सर्ट इन कंप्यूटर परव्यू ऑफ आरटीआई एक्ट, यह है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम. दैट इज सी स्टैंड फॉर कंप्यूटर emergency response and team, that is CERT. So union government has added the computer emergency response team CERT among a list of organizations that are exempted from ambit of Right to Information Act RTA. So the CERT है is the national nodal agency that is for responsible to computer security incident as when they occur. So one of its primary objective is to enhancing security awareness among common citizens. So CERT जो है is India's nodal agency that respond to computer security breaches. So in short, अभी हमारे पास कितने other intelligence agencies हैं? There are around 26 other intelligence and security organization established by the यूनियन गवर्नमेंट, सच है जिसमें कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, रॉ भी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंटी CRO that are exempt under RTI, Right to Information Act. So Right to Information Act जो है आपका, it was enacted in the year of 2005. That said the legislation shall not apply to intelligence and security organization specified in the second schedule. So the CERT has been probing major cyber attacks in recent past. It was the first responder to the ransomware attack on November 23, 2022 at AIMS, which has crippled the hospital information system and e-hospital system for several days. Next one, why is Bihar demanding the special category status? So what are the benefits which come with the title? What did the Raghuram Rajan committee suggest? नवंबर 22 को चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो वहाँ के हैं, CM हैं बिहार के,
that led passed a resolution seeking the grant of special category status, SCS. So the demand comes in the backdrop of the finding from of the Bihar Caste-Based Survey 2022. What is a special category status? So it is a classification granted by the center to assist the development of state that face geographical or socio-economic disadvantage. और ये जो है my friend स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को इंट्रोड्यूस किया गया था 1969 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फिफ्थ फाइनेंस कमीशन. कुछ क्या फैक्टर्स हैं अगर किसी भी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी देने का? पहला कि वो उसके पास हिली एरियाज होने चाहिए. पहला क्या होने चाहिए? लाइक हिली एंड डिफिकल्ट टेरेन. पहला आपका हो गया हिली एरियाज और डिफिकल्ट टेरेन स्ट्रक्चर होने चाहिए. लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो एंड साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन. थर्ड ये है स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलॉन्ग विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स. और नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस एंड नॉन वाइबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंस. सो 1969 में 3 स्टेट से जम्मू एंड कश्मीर, असम एंड नागालैंड दैट वो ग्रांटेड द SCS. ये ध्यान रखना है माय फ्रेंड्स. 1969 में असम, नागालैंड और JNK को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया. Subsequently, 8 more states including Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Sikkim, Tripura, Himachal और Uttarakhand that were given the special category status by the Israel National Development Council. So उत्तराखंड भी इसमें आपका, हिमाचल, त्रिपुरा, ये सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस आते हैं. What are the benefits? क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसमें? तो जो SCS होते हैं स्टेट्स दैट यूज टू रिसीव ग्रांट्स बेस्ड ऑन Gadgil-Mukherjee formula which earmarked nearly 30% of total central assistance for a state to the SCS state. However, after the abolition of the planning commission और 14th और 15th कमीशन के बाद ये इंक्रीज हो गई. तो जितने भी गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है उसमें उनका सेंटर का रोल ज़्यादा होता है. Why is Bihar demanding for SCS? So the demand for SCS for Bihar has been made by various political parties. The poverty and backwardness of the state are argued to the because of lack of natural resources. Simultaneously, the bifurcation of the state that has shifted of industry to Jharkhand and जब बिहार और झारखंड की डिवीजन हुई थी उस टाइम में that created a dearth of employment and investment opportunity. With a per capita GDP of around 54,000, Bihar has consistently been one of the poorest state. Do other states also want SCS? However, the central government, citing the 14th Finance Commission report, which made a recommendation to the center that no state be accorded the SCS, has repeatedly denied their demands. Is Bihar demand justifies? 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट आई थी जिसने सेंटर ने एस्टैब्लिश किया था प्लेस्ड बिहाइंड द लीस्ट डेवलप्ड कैटेगरी में और सजेस्ट किया था न्यू मेथोलॉजी बेस्ड ऑन मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स. सो यहाँ पे the first thing that you should know about it, what is special category status. So second thing is that when was special category status was announced, that was the answer is 1969. So initially there were 3 states, JNK, Assam and Nagaland, that were granted for the SCS. जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस था इसका पहले नाम दिया गया था, ये अनाउंस कौन करता था? NDC विच इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राइट. और इसके क्या क्या कंडीशन होती हैं टू कम्स अंडर द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस? व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 5 फैक्टर्स. वन इज हिली एंड टेरेन, डिफिकल्ट टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी. थर्ड वन आपका स्ट्रैटेजिक लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस, ट्राइबल पॉपुलेशन. So that are the things which is important to know about. तो ये सारी चीज़ें आपको we have already discussed about. पैरामीटर्स क्या क्या होने चाहिए, हिली टेरेन, लो पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ऑल. ये गैडगिल फार्मूला के ऊपर काम करता है. ये बेनिफिट में ये मिलती है सेंटर पे 90% ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड इन द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अगेंस्ट 60 to 75%. और अनस्पेंट मनी इन अ फाइनेंशियल ईयर दैट डज नॉट लैप्स एंड इट कैरिड फॉरवर्ड. 30% of central gross budget that goes to special category state. And what are the concerns regarding special category status के लिए? Now है fleet electrification. इसमें आपको air quality index जो है उस पर बात हो रही है, like
The air quality index in many Indian cities has entered the red zone several days this year. Millions of people have to face serious health hazards due to recurring increase in air population. और इससे ये साफ पता होता है, it is very clear that mitigation strategy that have to be prioritized as per two seminal studies that pertaining to Delhi, the urban emission 2015 और टेली की जो स्टडी है वो ये चीज़ें ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है. So in this era of urgency, every birth counts, deploying solutions swiftly is paramount. The recent demand for 7,750 e-trucks in India by 2030, if it is materializes, that will result in country saving over 1800 billion liters of diesel 2050 according. तो फिर हमारा जो COP27 की डिमांड है एट 2070 तक जो हमारा नेट जीरो का जो एजेंडा है, हाउ we will achieve it, because India is an important milestone for the 2070 net zero agenda. Transport sector decarbonization pathways that have to be led by truck electrification, right? So this is very important. Next है आपका यहाँ पे टनल, जो इस पे टनल की स्टोरी दी हुई है कि कैसे कैसे नवंबर 12 को क्या चीज़ें हुई थी. India woke up to celebrate Diwali and under construction is collapsed in the early hours of morning in Uttarakhand, that is trapping 41 workers. So इसमें मेंशन कुछ ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. So इसमें आपको ये जानना है कि जो गवर्नमेंट के पावर्स हैं, इसमें जो अदर लीगल प्रपोजल्स हैं लाइक इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल और इवन द मोर रिसेंट sort of 3 भारतीय क्रिमिनल जस्टिस अप्रूवल, तो जो यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती है फ्रॉम द डे ऑफ टनल कोलैप्स, जो बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको पब्लिश किया था. सो यहाँ पे लोअर कंट्रोल था और यहाँ पे जो मीडिया का रोल था, दैट वी शुड नॉट टू फॉरगेट. एंड हियर इज अ क्विक टिप्स, और इसमें हम देखेंगे सार्क कंट्रीज को लर्न करने के लिए द शॉर्टकट टेक्निक्स इज MBBS स्पेन, मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड Nepal. And here is SAB, states in India sharing boundary with Bhutan, Sikkim, Arunachal, Assam and Bengal. And here is questions of the day. Indus river basin is extended up to Ladakh, Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana. तो इसका राइट आंसर है माय फ्रेंड डी ऑप्शन है. In India, Indus basin spread over Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Punjab, part of Rajasthan, Haryana and Chandigarh. नेक्स्ट है आपका अन्नपूर्णा सर्टिफिकेट प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ, और ये है आपका कौन सा आएगा इसमें, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन. थर्ड वन इज which of the following groups of planets are considered as gas giant in our solar system. और ये हम कितनी बार भी डिस्कस कर चुके हैं. गैस जाइंट्स आर लार्ज प्लैनेट्स कंपोज्ड मोस्टली ऑफ गैसेस, जैसे इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम with a relatively small rocky core, and the gas giant of our solar system, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, that together make up a group known as the Jovian planets. Here is which substance is commonly used in cloud seeding. Cloud seeding मतलब artificial rain की बात हो रही है, तो इसमें silver iodide is the right answer. And the last question, production gap report. So D is the answer, none of the above. The right answer should be here is SEI, Stockholm Environment Institute. So this is all about the session, dear student, and I hope that you enjoyed the session a lot. We'll meet you tomorrow for the same time, and please make sure if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all Pratham Test Prep mentors. And please share this beautiful session to your friends and family, because they must be aware about what is happening around us. So we'll meet you tomorrow. Till then, bye bye and take care. अपना ख्याल रखें, and we'll meet you tomorrow at the same time. Bye bye and take care once again.